Hello, online students able to hear me? Yes, sir. Okay. Okay, let's start, guys. चलो पीछे क्या हुआ? I am not visible. वो पीछे का विंडो किसी को ओपन करना है तो कर देना if it is suffocating one. Because I think the strength is very huge in this case, है ना? इसको प्लेसमेंट नहीं चाहिए, तो I think okay, let's start then. Last class में क्या किया था discussion? GDP. Okay. Yeah, which are the questions? One by one. Okay. एक को एक, हाँ 4-5 मॉनिटर्स को मैं पूछ लूंगा, वो कोई एक बोल लेगा. Okay. What was the first question? Okay, wait. आराम से. Let me do one thing. I will. कितने questions थे कुल मिला के? 10. Okay, wait. Okay, 9 rows we have over here. Okay. So like first question पूरा रो मतलब like भले ही आंसर शायद सेम ही होगा ज्यादातर लोगों का, but then again we have to start in that manner only. What is the first question? हाँ बताओ क्या लिखा है? Okay. Any examples you have written? Yeah. Next, same question. नहीं. हाँ. पूरा लेक्चर इसी में चला जाएगा. पीछे एकदम शांति प्लीज गाइस. आई नो आप लोग करके आए हो, बट वेट टिल योर अपॉर्चुनिटी कम्स. हाँ. Okay. Okay, wait. We will jumbled up questions. कौन सा दूसरा क्वेश्चन किया है आपने? Anyone? Any questions? Okay. What is GDP? Okay. And what is the current GDP of India? No, real GDP. ऐसा हो ही नहीं सकता है. क्या लगा लेंगे? No, that is a growth rate. Numerical value होना चाहिए. That is a growth rate being projected for the GDP. Okay, what is the growth rate being projected for India's GDP? Something around 7 to 8%, which means that 7%. I am very optimistic in India's case. Okay. Yeah, so in that case, definitely 7% is that. That is one. Second, the current GDP of India is somewhere around, I guess, more than $3 trillion, and it has exceeded France. Huh? How much? More than 3. So it has already crossed $3 trillion. That is what I am saying. It has crossed. It is not projected. Okay, now we have the targets of $5 trillion by 2025. Okay, and we have to overcome now. I think around 2 to 3 countries are only there in front of us. I think one is US, second is China, and the third is Japan, I guess.
Okay, all of them are having more than 5. Something US is having 20, China is having 14 to 16, and Japan is having something 6 to 7. Yeah, वो थोड़ा नुकसान कर दिया होगा. ठीक है. Okay, negative growth है maybe. Yeah. Next question. Real versus nominal. हाँ बताओ. ये historical price. Example. Any example? चेयर बची हुई है. एक सेकंड रुको. चेयर बची है पीछे कि नहीं है? साइड बाजू के क्लास चेयर. So the differences between real GDP and nominal GDP. Say for example, if I want to compare the prices of the commodities, okay, तो अगर मैं current year का 2022 का कोई prices लेके compare कर रहा हूँ, then it is going to be my nominal GDP. But if I am comparing my historical prices, say for example in 2010, what was the price of crude oil? What was the price of your petrol? Okay, so say for example something around 60-70 rupees जो भी रहा होगा. In that particular case, I think we are going to have that real GDP. Okay. Yeah. Next. Loud. Companies. हाँ. So what are large cap companies? Okay. Any examples? अच्छा यूएस के ही उठा लिए. इंडिया के? Reliance Industries. Yeah, any company's classification. Yeah. So any companies which are having a market cap of how much? 20. Okay. 20,000 crores. If it is greater than 20,000 crores, what is the market cap? What exactly does it mean? Market cap? Outstanding shares multiplied with your current share price. Okay. So say for example, if Reliance is trading at something around 2,600, multiply it with your total number of outstanding shares. वो कहाँ से पता चलता है? Open the balance sheet of the last quarterly results of that company or last financial results जो भी उन्होंने publish किया हुआ है. If you multiply that thing, इसका मतलब ये हुआ, if today Reliance is closing it down the operations, तो हर एक investor को एक share का कितना price देगा? 2,600 rupees, which means that even Mukesh Ambani will be owning some shares, ना? He is the owner at the end of the day. Okay, तो how much shares he is owning? वो पता नहीं है, right? Okay, सिर्फ Reliance का नाम पता है. तो in that particular case, उसका जो net worth हम जो बोल रहे हैं ना, तो net worth is not like his total amount of assets that we are counting. If today Reliance का अगर complete operations आप बंद कर देते हो, for example, and whatever amount he is receiving from closing down of these operations in the market, that is his total net worth. And because of which Adani has actually taken over to him. Why? Because if you compare the share prices of Adani Enterprises or all other, I think Adani stocks, in that particular case, definitely he has surpassed Mukesh Ambani. Okay, Adani Enterprise का stock trade कर रहा था something around 130 rupees in 2020, and right now it is almost 3,000. So you can just compare the net worth what he is actually earned around this particular period. ठीक है? This is how you need to analyze the net worth or the capital worth of all these people. इसलिए उनका rankings जो रहता है ना, वो आता है ना कि top business people और top richest people. तो ऐसा नहीं है कि उनके पास वो liquid cash है. It's not that hard cash और कहीं पे घर में पूरा मतलब उसी के सजा के रखा हुआ है cash. If they are selling their shares today in the market, तब जाके उतना पैसा उनके घर में आता है. Okay? If tomorrow Reliance का share price 800 rupees चला जाता है, so in that particular case, his net worth will go down. Okay, that is how the theory or the principle of those market cap is working. The same if we go for the mid cap or mid-sized companies,
In that case, the market cap has to be between 5,000 to 20,000 CR. Okay. लाईट नाही यांच्याकडे बाबा. अरे बाबा लाईट नाही. हाय, मी चुकीचं बटन दाबलं. Okay. Yeah. Can you just mute your mic? असं जरा साफसूफपणा आहे की नाही, साफसुथरं. अरे पण तरीशी. Priyanka, can you just mute your mic? Hello. Priyanka, are you there? Okay. And if it is the small cap companies, your market cap has to be less than 5,000 CR. Okay. So this is how we are categorizing all the different types of companies. Okay. Okay. Next question. Mid cap examples. Cash. Yes. Just a minute. Online students, do not own your mic unless I am asking about it. Continue. What is 101 to 200? कि गूगल में मिला था इसलिए डायरेक्टली Ctrl+C Ctrl+V. कौन सा रैंकिंग है? See, don't do these assignments in this way. जहाँ पे आपको गूगल में लिखा वही उसका अपने वहीं से प्रिंट आउट निकाल के अपने don't do that. At least understand what exactly it is trying to convey. That ranking is for Nifty index. उसके बाद के Nifty 100 stocks and 200 stocks. Okay, but this is not the correct way. Getting my point? Okay, तो market cap के हिसाब से आपको करना है क्या? Buy companies in India or what? Debt-free companies. Okay, debt-free. Yeah, what are debt-free companies? Any, like, what is the meaning of debt-free? I know the examples. She has already spoken. What is the meaning of debt-free? Sir, companies who have not raised money in the form of loan or debentures. Yeah. So basically, loan ke, yeah. So loans, no liabilities, nothing. Okay. They are operating based on their free cash flows. Free cash flows मतलब उनके पास surplus amount of money है जहाँ से वो अपने खुद का currently operations को sponsor कर सकते हैं. उनको बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. A very simple terms if I say that. Okay. Yeah. अच्छा, across the world. हाँ, बताओ. हाँ. Okay. Any other stock exchanges besides these 5? Nasdaq, most important. Why New York Stock Exchange and Nasdaq is one in the same. Frankfurt, Luxembourg, Tokyo, Euro next. chalega. Okay. So basically, if you had tracked the Nasdaq stock market on Friday evening, देखा था किसी ने मनी कंट्रोल पे जाके या मुहूर्त करना बाकी है? Yes, sir. Okay. Sir, so yeah, so Nasdaq itself fall by something around 400 points in Friday 3%. evening. Yeah. 3.3%. Nasdaq नेगेटिव में चल रहा है. कब फ्राइडे को? हाँ. How many points? So that is what you need to remember. So something if the market has been crashed on that day, उसका impact हमको Monday सुबह आया ना directly. Our Nifty was something down by 200-300 points. Bank Nifty went down for nearly 1,000 points.
Okay, but Sir, today Sensex was down by 1400 points on Monday. Yeah, but Sensex we generally don't track it unless another, because nowadays we are only stock specific or we are directly dealing into index based trading. Okay, what is index based derivatives में जब हम futures and options सीखेंगे तो clear है? Yes, sir. Yeah. So this is one of the reasons that there is a correlation between Nasdaq and Nifty. Negative news वहां पे थे, impact हमारे markets में आ रही है. Otherwise, what negative news were there? India का war हो गया था क्या? नहीं ना? हाँ? Sir, Fed gave that Fed and that Sir, Fed has a meeting. I don't remember the name exactly, but they said they will They do were hike aggressively the- going to tie the interest, hike the interest rates. Yes. That was the only reason. So for that particular reason, you need to identify the correlation between interest rates and stock market. Okay, if your interest rates are increasing, your stock market will go down. Why? Sir, because liquidity decreases in the economy. Government is taking the money. No, that is fine. But generally, there are huge number of investors who will prefer to have fixed income. Okay, so all the debt instruments जितने भी है markets में, वहाँ पे क्या होता है generally? Say for example, if my money is pulled into capital markets, which is your stock market, तो वहाँ पे it's a fluctuating nature, right? कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा. I'm not sure whether I'm going to have that short of returns. Okay. On the other case scenario, if I'm investing into money markets or debt markets, there is a higher probability that I will be getting fixed returns. भले ही वो 5% है, 10% है. Say for example, आप लोगों ने FD पता है? Fixed deposits? Yeah. Okay. तो fixed deposits में कभी ऐसा हुआ कि माइनस में चला गया रिटर्न? बैंक वालों ने पैसा आपको दिया ही नहीं वापस, something like that. Your capital was depreciated. Did it ever happen? No. So that is one of the major reasons why you need to invest into money market instruments. Every time your capital markets are not going to be bullish. जब वो bearish होंगे तब आप switch क्या करोगे? वहां से पैसे निकाल के money markets में डाल दोगे या debt market instruments में. So this is the correlation between your interest rates and your stock market. At the same time, अगर crude oil prices अब जाती है तो क्या होता है? Crude oil. What is crude oil? Commodity. हाँ? Sir, crude oil is a commodity. हाँ, the commodity तो ठीक है, मुझे भी पता है, but like what exactly? हाँ? Yeah, that is fine. तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो क्या क्या हो सकता है? पेट्रोल का भाव बढ़ेगा. Okay, now understand the process. अगर पेट्रोल का भाव बढ़ता है तो क्या क्या चीजें इम्पैक्ट हो सकती है? Can anyone tell? Sir, inflation will increase in the economy and But कैसे? That is the final Sir, stage. logistics cost will increase. Logistics for and the supply goods. chain cost will increase. What Supply is chain. logistics and supply chain? Transportation cost. तो कोई भी goods, आपकी yes. basic commodities जो होती है, what are your basic commodities? Sir, food. Yeah, so Wheat, अगर हम बेसिक लेवल पे बात करें योर मिल्क एंड वेजिटेबल्स, अगर ठीक है, तो उसके अगर पहले ही उसके प्राइसेस बढ़ने लगे, ओके, व्हाट विल हैपन टू योर हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर्स? इंक्रीज हो जाएगा. से फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम देखा था आपका कितना था मंथली, अच्छा 1 लाख तो नहीं था, वो तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा. अभी के लिए 20,000 रखते हैं इंडिविजुअली. ओके, तो आपका 20,000 था, वो 25,000 चला गया. ठीक है, तो कौन से आप अपने ड्रीम गोल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो? इन दैट केस कोई एक तो सेक्रीफाइस होगा. से फॉर एग्जांपल ऑन अ वेरी स्मॉलर स्केल, आई गेस यू आर नॉट परचेसिंग योर आईफोन 15, 20, 25 जो भी आ रहा है, या वही होगा एट द एंड ऑफ डे. That extra 5,000 rupees, whichever has increased because of the increase in the transportation cost and also increase in your basic commodities, inflation बढ़ गया automatically. Inflation क्या होता है? महंगाई जो बोल रहे हैं ना आप लोग, ठीक है, आपकी मिंत्रा की शॉपिंग स्टॉप हो गई. That case, okay, yeah, any other things or any other luxurious or any other semi-luxurious items which you stop purchasing from the markets. Why? Just because you are required to spend more on to your basic commodities. ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि हम खाए बिना कुछ भी नहीं है लेकिन शॉपिंग करना है हमको. You are staying hungry in that case and you are purchasing many things. ऐसा तो होगा नहीं ना कभी. Okay, so this is how these markets are working.
इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो व्हाट स्टेप्स आरबीआई टेक्स? आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक, व्हाट स्टेप्स दे आर टेकिंग? वो पहले हाँ मॉनेटरी पॉलिसी है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करते हैं, जो रेपो रेट्स बोलते हैं ना वहां पे, व्हाट आर एग्जैक्टली दोस रेपो रेट्स? इट इज द लेंडिंग रेट ऑफ आरबीआई टू अदर बैंक्स। जब आरबीआई दूसरे बैंक्स को पैसा देती है एज अ लेंडर, दैट इज नोन एज रेपो रेट। And the other way is reverse repo, which is when other banks are parking their extra funds to the RBI, that is your reverse repo. So write down the first assignment for today. What is the current repo and reverse repo rates? What is the current repo and reverse repo rates, or what are the current? What are the current repo and reverse repo rates? आगे के बेंचेस वाले थोड़ा हेल्प कर देना, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है पीछे शायद। मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन था आपके पास? नहीं ना? ओके, उसके साथ लिखी दो, what are fiscal policies and what are monetary policies? Write down the question, what are fiscal policies and what are monetary policies? Fiscal. Written, everyone? Okay. After that, okay, reverse repo. So RBI, whenever it is giving loans to the other banks, why? Circulation of money is maintained by RBI. Last time we had discussed. Otherwise RBI क्या कर सकता है? Keeps on printing money. हम हर एक लोगों को वो बांट देता है, distribute कर देता है. And amount of money, what will happen? Inflation will again rise. Why? हर एक के पास 10 lakh rupees है, say for example. Now there is one commodity. तो वो commodity हर एक को मिलेगी या किसी एक को मिलेगी? किसी एक को। किसको मिलेगी? जो सबसे ज्यादा बिड करेगा। तो बिड करेगा का मतलब क्या हुआ? वही 10 लाख की चीजें whosoever has bidded for 50 lakh rupees or 70 lakh rupees, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन का प्राइस चला गया ऊपर वहां पे। दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल रीजंस हाउ इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग इन अवर कंट्री। एंड आरबीआई फिर उस टाइम पे क्या करता है? रेपो रेट्स बढ़ा देता है। व्हाट इज रेपो रेट? इट इज द लेंडिंग रेट फ्रॉम आरबीआई टू द अदर बैंक्स। तो अगर दूसरे बैंक्स को उनके लेंडिंग रेट्स कॉस्टली हो जाएंगे, आरबीआई से महंगा मिल रहा है ना पैसा उनसे, ठीक है, तो व्हाट दे विल डू? दे विल पास दैट इफेक्ट टू देयर लोन प्रोडक्ट्स। बैंक्स का मेन बिजनेस क्या है? लोन देना होता है ना, कि और कुछ होता है? ठीक है, तो जब दूसरी जगह पे ये इफेक्ट आ गया तो उनको तो कॉस्ट बढ़ गया ना, उनको तो उतना इंटरेस्ट रेट बढ़ना, मतलब जो इंक्रीज हुआ है वो देना पड़ेगा। नाउ इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? आपके जो ईएमआई है वो बढ़ जाएंगे, योर लोन रेट्स आर इंक्रीजिंग। से फॉर एग्जांपल हाउसिंग लोन आपका 6% चल रहा था, 10% हो गया बिकॉज ऑफ द, होगा नहीं इतना बट से फॉर एग्जांपल, तो आपका ईएमआई बढ़ जाएगा। तो आपका जो 20,000 वाला हाउस होल्ड वाला कैलकुलेशन था बिगड़ गया, वो 30,000 पे चला गया। तो जो एक्स्ट्रा 10,000 आपको अर्न करने हैं वो कहाँ से करोगे? आपकी सैलरी तो उतनी है, कंपनी ने मना कर दिया सैलरी हाइक देने से, ठीक है, तो कहाँ पे मतलब बैलेंस कैसे करोगे फिर? How will you balance? Expenditures control. Okay, so the other expenditures that you are making, you will try to control, based on which you will be able to repay that extra 10,000. इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप एक्स्ट्रा जहां कहीं पे भी स्पेंड कर रहे थे उसकी डिमांड कब हो जाएगी? उन प्रोडक्ट्स की।
अब जैसे ही हर एक चीजों के ऊपर धीरे धीरे इम्पैक्ट आना लगेगा, व्हाट विल हैपन, कई लोग ऐसे भी होंगे ना लोअर मिडिल इनकम हाउसेस या फिर लाइक वेरी लोअर क्लासेस कि जहाँ पे वो 2 टाइम खाना खाते थे वो 1 टाइम ही खाएंगे। ऐसा हमने देखा है, सुना है शायद कहीं ना कहीं पे, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, हर एक चीजों के ऊपर डिमांड कम होता जाएगा। डिमांड कम होगा तो प्राइसेस का क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज। डिक्रीज होगा, डिमांड ही नहीं होगा तो प्राइस डिक्रीज करना पड़ेगा ना। इंक्रीज कैसे होगा, कोई खरीदने के ही नहीं ले उसके लिए आ रहा है, और वो चीज पहले 100 रुपए में मिलती थी, आज उसको कोई 90 में भी नहीं ले रहा है। वाई, डिमांड ही नहीं है मार्केट में। तो दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ इकोनॉमिक्स, गोल्डन रूल ऑफ इकोनॉमिक्स। whatever supply is there, the demand has to be there, or whatever demand is there, the supply has to be there. So demand and supply has to be maintained as an economic equilibrium. Okay, so just write down, in a stable economy demand is equal to supply. In a stable economy demand is equal to supply. Okay, done. Now further, अच्छा okay, उसके बाद questions, yeah. Okay, next. Okay. Okay. अच्छा, any other recent examples? I think because ये बहुत historical examples हैं, बहुत पहले के हैं. Any recent examples? Any other than this? You have identified the stocks which is having like a capital appreciation of 1000%. हाँ? Zensar कितना था? Okay, और पहले कितना था? Any other than this? Any other? क्या पूरा नाम क्या है? हाँ, ओके। और आप लोगों ने कौन सा लिखा हुआ है? मिला ही नहीं है स्टॉक ऐसा। हाँ? मारुति सुजुकी, हाँ, आईसीआईसीआई, आईसीसीआई नहीं होता है, आईसीआईसीआई वही मैं सोच रहा हूँ कौन सी बैंक। ओके ओके, टेनला प्लेटफॉर्म्स किसी को नहीं मिला? टेनला, TANLA, टेनला प्लेटफॉर्म्स है ना? टेनला प्लेटफॉर्म्स इज वन। about Tanla platform. Sir, Tata Teleservice. Tata Teleservices, TTML is not 1000%. शेयर प्राइस कहाँ 1000% हुआ है अभी तो वो कैसे? सर 10 का 3 100 रुपए हुआ से है, 200 ज्यादा से ज्यादा 120 चल रहा है अभी। कौन सा 1000 पे जाके आया है? सर नहीं, 3 से 290 गया था ना। एक से सर 3 रुपीज से 290 रुपीज गया था। ओके, हाँ, तो इन दैट केस इट इज पॉसिबल, अदरवाइज इट इज नॉट, आई गेस। या सर राधे डेवलपर्स। हाँ, ये सब कुछ कुछ ऐसी कंपनीज रहेगी जहाँ पे यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई सच थिंग्स। ओके, ठीक है। बाकी लोगों को पता चला व्हाट इज कैपिटल एप्रिसिएशन ऑफ 1000%? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज कैपिटल एप ऑफ 1000%? व्हाट डज इट मीन? उसका मतलब क्या होता है?
Share price into 1000 percentage, not base price, like from the initial buying price to the selling price. So if I am buying at 1 rupees, I am selling at 1000 rupees. Okay, 1000 में नहीं 1001 होना चाहिए, तब जाके वो 1000% होगा, something like that. तभी वो 999 point something आएगा. Okay, understood? 1 रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो उसका रिटर्न मुझे 1000 रुपए मिल रहा है. ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है आपको. सिर्फ 1 रुपए इन्वेस्टमेंट, 1000 रुपीज इज योर रिटर्न. ओके, या नेक्स्ट. ओके, कोई भी असाइनमेंट्स नहीं है? ओके. टू 2009 में 30 रुपीज था. सर सुबेक्स हाँ ले सकते हो, दैट इज फाइन. हाँ यस, विच वन? ऑनलाइन में से एनीवन? Yeah. Okay, any other? Yeah, next question. अच्छा, इन द फॉरेन कंट्रीज कहाँ पे लिस्टेड है? अच्छा, एफडी रेट्स. ओके, हाँ बताओ. ओके, ओके, या पीछे. फर्स्ट डे या पीछे लास्ट में एकदम. एक भी नहीं किया है भाई. 3 छुट्टी थी आई गेस. हाँ, समझ में नहीं आया. एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया. हाउ कम? Okay, next. First day. Last, yeah. वो क्वेश्चन लास्ट में हमने कौन सा लिया था? एफडी रेट्स. उसके बाद ओके. नहीं, लेकिन क्वेश्चन उसके बाद का है. हाँ, okay. Yeah, next. Australia 1.85%, France 0.50%, South Africa 3.92%, Canada 50%. साउथ अफ्रीका कितना है? साउथ अफ्रीका लास्ट इज लास्ट प्रीवियस 4.7. Oh, 1 to 2% fluctuation is fine, but I think based on that we can analyze. Yeah, calm down everyone. Okay, ठीक है, लेकिन वो बाद में we can analyze it. वो रिसर्च कर लिया है आप लोगों ने, that is fine. Okay,
Yeah, so basically what we are trying to analyze is our interest rates are something around 5 to 6% or 7%. यहाँ पे ज्यादातर I think more or less 1%, 2%, 0.5%. Okay, which means that अगर आप FD बनाने के लिए जा रहे हो ना वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ आपको 0.5% ऑफ रिटर्न्स मिल रहा है. Are you happy with that? No. अच्छा, पैसे तो लेके आओ पहले, फिर नो बोलना. ओके, FD बनाने के लिए कुछ चाहिए पहले, ठीक है? या नेक्स्ट क्वेश्चंस खत्म हो गए. ओके, okay. So let's move and start further. Yeah, from online students everyone is done या किसी ने कोई assignments नहीं किए? Online students everyone? Yes, sir, done, sir. Yeah, Rushikesh? Done, sir. Okay, Pratik? Yeah, sir. Okay. Nikita, Gayatri, Anjali? Yes, sir. All the assignments are clear? Yes, sir. Yeah, sir. Done. Yes, sir. और कितने लोगों ने वो पोस्ट करना स्टार्ट किया है लिंक्डइन पे? How many of you have started posting on LinkedIn? Link? सर मैंने किया है सर एक को. या I have also. बहुत सारे देखे आई गेस. ओके, तो बाकी लोगों का यू आर पेंडिंग. डन, ठीक है. Who is left? Anyone who has not yet posted anything? X. Okay, why? Last week. Yeah. Okay, why? Okay, but keep on posting. But लेकिन आज के recent articles तो कोई भी किसी ने ग्रुप में नहीं डाले. हाँ, अभी ब्रेक में डालेंगे. Yeah, whatever the current affairs that I mentioned about, at least one article from Money Control or Financial Times or Economic Times, उसका क्या हुआ? वो भूल गए? हाँ? आज से करेंगे, कल से ही स्टार्ट करो, कल अच्छा दिन है ना? Okay, do that. Tomorrow is festival. Okay, you can do that. Yeah, वैसे भी कल छुट्टी है शायद आपको, तो आपको टाइम ही मिलेगा. बाकी दिनों के लिए आप बहुत बिजी रहते हो. All the investment bankers. Yeah. Okay. Okay, let's start with very basics. Okay, so we're basically now more or less you got an idea about like how financial system is working, how economy is working. Okay, how our GDP is helping our nation to build. Okay, GDP का सबसे ज्यादा फोकस कौन से सेक्टर पे होना चाहिए? Anyone? Agriculture, no IT. Tertiary sector. Infrastructure, yes. इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कुछ भी नहीं कर पाओगे. ना आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा, ना आप बेस्ट टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर पाओगे विदाउट दैट, विदाउट सेंडिंग हियर एंड देयर. ओके, नो कनेक्टिविटीज, नो ब्रॉडबैंड्स, नो इंटरनेट, नो नथिंग. So in other words, we need to have strong infrastructure first at place so that you will be able to improvise your financial economy. Okay, now starting with the first chapter, introduction to financial system. तो पहले बेसिक क्वेश्चन. अब आज के कुछ क्वेश्चंस विल बी लाइक डिवाइडेड इनटू मॉक्स बेस्ड क्वेश्चंस एंड सम क्वेश्चंस इनटू योर डेली जो आपके करंट अफेयर्स के असाइनमेंट्स रहते हैं. ठीक है, सो राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर मॉक्स बेस्ड इज व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम एंड हु आर द की पार्टिसिपेंट्स? What is a financial system and who are the key financial what is a financial system and who are the key participants? What is a financial system? Who are the key participants? की मतलब कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं? लॉक नहीं चाहिए, सिर्फ की चाहिए. ओके,
Okay. Yeah. After that, so what basically is your financial system? It is nothing but like if we can understand a very basic things, it come no murmurs. Yeah, so if we understand to like try to understand how exactly all these things are working, हमको इतना पता चला कि there are some like basics of different markets available, right? Okay, so say for example, financial system will comprise of what many things. There has to be markets first of all at place, जहाँ पे पहले कौन दो लोग मिलेंगे, buyer and seller. Okay, now buyer and seller साथ में आ रहे हैं, so there has to be certain mechanism through which they are getting connected. What is that mechanism? Brokers. There has to be one intermediary. Okay, तो वो question brokers के कुछ नहीं लिखा है ना आपको? Okay, yeah. So there has to be a broker who will channelize all these things. Yeah, channelize मतलब एक जगह से ले रहा है दूसरी जगह से दे रहा है. लेकिन in that particular process, what exactly is happening? It is allowing the buyer to buy the securities and allowing the seller to sell his securities. अगर मुझे रिलायंस के 100 शेयर्स खरीदने हैं, मुझे पता कैसे चलेगा कि आपके पास वो 100 क्वांटिटी शेयर्स हैं which I can purchase at a given price. I can only know that particular aspect through stock exchange. Now how that exchange comes to me? With the help of the brokers. Nowadays you have online brokers and offline brokers. Assignment question: identify 5 online and offline brokers of India. Identify 5 online and offline brokers of India. Brokers are online and offline both, so we will consider that in both of them. ऐसे ही 5 brokers के नाम. Then we will discuss like what is the difference and all those things once you come with the names. Okay, sir. Yeah. उसके बाद क्या होना चाहिए? We need to have products in the place. Like buying selling क्या करोगे? कुछ product होनी चाहिए ना, financial product in the market. वो कौन सी product होनी चाहिए? Your cash equities or stocks. Okay, then your bonds, your money market instruments, your fixed income securities. All these different range of products has to be there into your financial system. Yeah. Further, there should also be financial services. Can anyone give me example of financial services? Lease financing. Okay, that is one. Then any other? Sir, so stock brokers. No, no stock brokers. A brokerage service, that is fine. Then mutual funds, yes, definitely. Portfolio management services can be there. Advisory services जो होती है. Yeah. So say for Yes, example, if you are having a huge amount of money and I am your financial planner, then definitely you will come to me and say that I have 10 lakh rupees with me. I want to invest somewhere where I can get at least good amount of returns. Okay. तो वो जो मैं services provide करूँगा आपको with an objective to give you at least 10% returns every year. 10% कितना होता है 10 lakhs का? 1 lakh. Okay. तो 1 लाख रुपए आप कमाते हो, लेकिन मेरा क्या? मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना उसमें से. So what will be that? That will be my management fees or advisory fees. So that comes down under all the categories of your different financial services. Okay. So financial system definitely plays an important role in the economy of the nation. It channelizes the funds between lenders and borrowers. The primary goal of any financial system is to accelerate the growth of the economy, the way we have discussed the case of India. Okay. Financial market के benefits क्या क्या हो सकते हैं? So mocks based question लिख लो. What are the benefits of a financial markets? What are the benefits of financial markets? That is a mocks based question. What are the benefits of financial markets? Yeah. After that,
So what could be the major benefits of such financial markets? Any idea? Sir, making money. Okay. Then? Sir, making funds available to institutions. Yeah. So basically, Company. first of all, a very basic function, channelizing of funds from lender to borrower. जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जिसको पैसे की जरूरत है, both the cases we need to understand. Okay, तो सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? Say for example, lenders or investors. पैसा किसको चाहिए? कंपनी को. Okay, now let us take a very simple example to understand this. How many of you are using Paytm? Any other UPI apps? Paytm तो एक है. Okay, Paytm I am saying because it is listed. Google Pay आपका listed नहीं है यहाँ. Okay, but I hope everyone once you have used Paytm, एक बार तो use किया होगा. Yeah, ठीक है. Now Paytm का share price जो था, issue price जिसको बोलते हैं. Okay, it came for the first time in the market. It offered at a price of 2100. What does that mean? अगर आपको मेरे shares खरीदने हैं, तो मेरा एक share का price है 2100 rupees. Okay, so if you want to buy, say for example 10 shares, it is something around 21,000 rupees. Okay, now what does Paytm actually did in that entire process? Say for example, मैंने एक startup किया है start as a business venture. I have started something. Say for example forex का, ठीक है? In that particular case, let us assume that I am dealing into different set of investors, offering them different set of services. Not only forex, but say for example, I am also giving them options and other derivative services together. ठीक है? तो मैं उनका portfolio handle कर रहा हूँ. And after that, definitely, I guess they are able to earn sustainable returns or satisfactory returns out of it. अब धीरे धीरे करके 10 लोगों को अच्छा रिटर्न मिला, 20 लोगों को मिला, 100 लोगों को मिला. तो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड जो हुआ वो 1000 इन्वेस्टर्स तक चला गया, 10,000 इन्वेस्टर्स तक चला गया. इट कैन हैपन राइट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years 5 years. उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ये लगा कि आई नीड सम मोर फंडिंग. व्हाई? आई नीड टू एस्टैब्लिश फिजिकल ऑफिसेस नाउ. आई नीड मोर स्टाफ. मुझे ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ेगी टू मैनेज सो मेनी थिंग्स. पहले 10 लोगों का मैं देखता था पोर्टफोलियो, अब मुझे 1000 लोगों का देखना है. So on a long-term horizon note, I need to have that establishing funds with me. तो मैं कहाँ पे जाता हूँ? I will definitely go to different investors, angel investors जिसको बोलते हैं, या और any other. कौन-कौन हो सकते हैं? No FIs directly कहाँ से आते हैं? और कौन-कौन हो सकता है? या Venture banks capital. can be one. Other than that, venture capitalist. Okay, or any other crowdfunding sources if you have heard of. अच्छा नहीं सुना है, write down that assignment. What is crowdfunding? And also write down what are the different sources of funding. What are the different sources of funding for any firm? What are the different sources of funding for any firm? So multiple. Okay. So done. Question written पीछे. Yeah. Now in that particular case, मुझे अलग-अलग sources of funding से पैसा मिला. Yeah. Now what has happened exactly? पैसों से मैंने क्या किया? धीरे-धीरे multiple offices I opened up everywhere. Say for example in the 4 metro cities as of now, Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, 4 जगह पे खोला है. After 2 years, I am still expecting वो 10,000 investors have now converted into 50,000 investors. Like aggressively मेरा growth हुआ है. So what will I need to do? I need to open more offices now everywhere. Tier 1 हो गया, Tier 2, Tier 3 cities everywhere, right?
तो मुझे और फंडिंग आता है फ्रॉम न्यू सेट ऑफ इन्वेस्टर्स, जिसको आप बोलते हैं सीरीज ए फंडिंग और सीरीज बी फंडिंग. ओके, बेस्ड ऑन माय वैल्यूएशन. व्हाट इज माय वैल्यूएशन? आई एम सेइंग कि 10 years डाउन द लाइन मेरी कंपनी की जो वैल्यू है ना वो 100 CR होने वाली है. डिस्पाइट द फैक्ट अभी करंट सेल्स जो मेरे हो रहे हैं रेवेन्यूज है दैट आर ओनली 10 CR. ठीक है, 10 CR का मेरा बिजनेस है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि वो 1000 CR होने वाला है. तो कोई इन्वेस्टर्स डेफिनेटली इन्वेस्ट करेगा मेरी कंपनी में आके, राइट? वाई? बिकॉज अगर ये 10 CR से 1000 CR तक पहुंच गया, जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ रिटर्न्स दिस कंपनी विल बी रिसीविंग और द इन्वेस्टर्स विल बी रिसीविंग इन दैट केस. उनका तो कैपिटल एप्रिसिएशन अपने आप ही कुछ ज्यादा हो जाएगा ना. तो दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग. they pumped in something around 100 to 200 CR for infrastructure building. ठीक है, ये हो गया सब जगह में. हाँ, एफपीओ अभी नहीं आएगा, आईपीओ नहीं आया तो एफपीओ कहाँ से आएगा? हाँ हाँ, बट अभी हम लोग वहाँ आईपीओ तक नहीं पहुंचे. दैट इज माय व्हाट आई एम सेइंग. अभी आईपीओ ही नहीं आया मेरा. ओके, नाउ इतना हो गया एस्टेब्लिशमेंट. ओके, नाउ 3 years डाउन द लाइन माय कंपनी स्टिल फर्दर ग्रोइंग और 1 लाख इन्वेस्टर्स हो रहे हैं, लेकिन मेरा जो सेल्स था ना वो 10 CR से सिर्फ 30 CR ही गया हुआ है. तो व्हाट हैज हैपेंड इज माय प्रोजेक्शन इज स्टार्टेड गोइंग टू डिक्रीज. वो 1000 CR नहीं जा रहे, वो धीरे धीरे 700 600 CR पे आ रहा है. प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? जो इन्वेस्टर्स ने वो 100 200 CR मेरे में इन्वेस्ट किया था, दे आर नाउ आस्किंग मी टू गेट सेटिस्फैक्टरी रिटर्न्स और मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ. तो मैंने क्या किया? I decided to go to the public through the IPO. What is IPO? It is the initial public offering, which means you are diluting my shares. मैं पब्लिक को अपने शेयर्स बेच रहा हूँ और उनको बोल रहा हूँ कि मेरी कंपनी का वैल्यूएशन 1000 CR है. अगर आपको शेयर चाहिए मेरे, तो आई विल गिव इट यू एट अ प्राइस ऑफ 2100. एज ऑफ नाउ उसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज है और वो मैं बेच रहा हूँ आपको 2100 रुपए में. व्हाट डज दैट मीन? अगर कल मेरी कंपनी बंद हो जाती है और आपने 100 शेयर्स खरीदे हैं एट अ प्राइस ऑफ 2100, बट कंपनी बंद होने के बाद आपके पास कितना पैसा बचेगा? 100 शेयर्स इंटू 1 रुपीज फेस वैल्यू विच इज 100 रुपीज ओनली. इन्वेस्टमेंट कितना था? 2100 इंटू 100 विच इज 2,10,000. इतना हुआ क्लियर? एनी डाउट स्टिल नाउ? ओके, नाउ आफ्टर ऑल दिस थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग इज आईपीओ लेके आ गया. ठीक है, लोगों को मतलब मैंने शेयर्स बेच दिए अपने. 30% ऑफ माई इक्विटी स्टेक आई डाइल्यूटेड. मेरा इक्विटी 100% था, उसको मैंने डाइल्यूट कर दिया 30% मार्केट्स में. 70% अभी बचा है मेरे पास और मैंने लिस्ट करवाया 2100 पे स्टॉक एक्सचेंज पे फॉर द फर्स्ट टाइम. तो उसका बेनिफिट क्या हुआ मुझे? द 70% इक्विटी शेयर्स जितने भी है मेरे पास, दे गॉट कन्वर्टेड फ्रॉम ₹1 to ₹2100. मेरा नेटवर्थ कितना हो जाएगा? कैन यू जस्ट इमेजिन? जिस चीज का 1 रुपये वैल्यू था उसका मैंने 2100 रुपए का वैल्यू कर दिया है. अगेंस्ट दैट 70% आई एम होल्डिंग. और 30% का जो पैसा मेरे पास आया है उसका मैंने क्या किया? अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स थे जितने भी, वो वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर्स और व्होएवर इट इज, उन लोगों को मैंने वो पैसा वापस कर दिया. मैंने अपना पैसा मेरा अंदर कर दिया. किसके पैसे फंसे एट द एंड ऑफ डे? पब्लिक के. ओके, so the same thing has happened in the case of Paytm. Now you can correlate. Paytm is a loss making company for the past 5 years, जिसको फाइनेंशियल्स या बैलेंस शीट्स पता है. ठीक है, और कौन सा ऐसा बिजनेस कर लेती है कि उसका वैल्यूएशन उसको वो 2100 रुपीज पर जाने की जरूरत पड़ी? उसका वो शेयर प्राइस आई थिंक इट केम डाउन टू समथिंग अराउंड 500. या तो इन्वेस्टर्स का नुकसान कितना हो गया? कैपिटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो फ्रॉम 2100 to 500. कैलकुलेट परसेंटेज लॉस कितना आ रहा है?
Sir, 76%. कितना आ रहा है? 75, 76%. 400 तो नहीं हो सकता है. 2100 minus 500 divided by 2100, 76% depreciation है. 400 तो कैसे होगा? 100 से ऊपर जा ही नहीं सकता है. कितना परसेंटेज आ रहा है एवरीवन? कॉस्ट प्राइस क्या है आपका? 76%. क्या 76%? 100% तब होगा जब वो 2100 का जीरो हो जाएगा. तो 400% तो पॉसिबल ही नहीं है इन एनी केस. ठीक है, डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी. So 76% is your net capital depreciation. Okay. Okay. हाँ. कितना? हाँ, तो क्या what was the cost price और selling price? हाँ, तो 500 minus 2100 divided by 2100. 2100 से करना पड़ेगा ना, आपने 500 से कर दिया होगा, इसलिए आपको वो 400% वाला वैल्यू आ रहा है. ओके, डन. अभी आ गया 76% की नहीं है अभी भी? आ गया आपको? Everyone got 76% loss. Okay. Now let's move further. So just you can imagine कि 76% ये जो loss आया वो किसको आया? Public को आया ना? Public के पैसे डूबे at the end of day. So you can imagine how Paytm fooled the investors. वही हुआ ना? Actually तो valuation उतना था ही नहीं. Irrespective of hiring the best quality CAs and making them manipulate with the share prices, this is how the stock markets are working. Clear है? Any doubts now? Okay. Okay, further. Now, what could be the another benefit? What could be the other benefits of financial markets? Liquidity मिलेगा. More number of investors in the market. In that particular case, how much it will be there? Definitely, पहले 10 investors आते थे. By bringing in something around 10,000 rupees. तो कितना amount rotate होता था? 10,000 into 10 investors, which is 1 lakh rupees.
Now if the same 10,000 rupees are being brought by 100 investors, तो कितना liquidity हो जाएगा? 10 lakh rupees. So the higher amount of investors in the market, the higher number of transactions in the financial system, the higher is the liquidity. What is liquidity? Your liquid cash. Okay. So it becomes easier for the buyer and seller to carry out the transactions. Is it clear? Okay. Third major benefit is reduction in the transaction cost. What is transaction cost? Whenever I am buying and selling my securities, brokerage लगता है मुझे. Why? Because I am dealing through a broker. तो आपको जो एक असाइनमेंट दिया गया था आपको, वो आर द 5 brokers and so all. ठीक है, तो उसमें से फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग वन एग्जांपल ऑफ Zerodha, which is one of the leading online brokers. ठीक है, तो he is taking a charge of ₹20 for buying and a charge of ₹20 for selling on intraday basis. तो 40 रुपीज तो पहले आपको सिर्फ उसको ही देने. उसके बाद आपका आता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसके बाद आता है आपका जीएसटी, उसके बाद आता है इनकम टैक्स, और फिर आपको गेन मिलता है तो कैपिटल गेन टैक्स, which means that you need to break even something around at 100 rupees. पहले तो 100 रुपए किसी को ही दे देने, उसके बाद कुछ बचता है हमारे लिए, then I will be having a profit out of it. This is what that structure of that profit and loss means over there. Is it clear? Any doubts in this up till now? Okay, please make sure of remaining all the examples, huh? Because in the mocks you have to follow that IBC structure: introduction, body and conclusion. Introduction is a definition of the concept, body is your explanation of the concept in your own words and along with the examples, and last में आता है आपका conclusion. Okay, this is what you need to follow. Clear? Any doubts up till now? Okay. On top of that, say for example, if there was no broker available in the market, how will I come to know the price of the Reliance share is something around 26 or 2700 rupees? कैसे पता चलता मुझे? डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज, तो क्या बॉम्बे जाओगे उसके लिए? वो तो दूसरे दिन आता है. Seller who is willing to sell. कैसे? सर जो सेलर बेचने के लिए रेडी रहेगा वो अपना प्राइस कोट करेगा, तो सर उस प्राइस में अगर आपको सेलर कहाँ पे मिलेगा? सेलर को ढूंढने कहाँ जाओगे? Okay, so basically in that particular case, we need to understand that there has to be one system at place. भले हमारे पास वो NSE का आज वेबसाइट है, वो पहले नहीं हुआ करता था, तो कैसे चलता था? You remember that Harshad Mehta series? Yeah, you remember that brokers and the jobbers का वो ring रहता था? Okay, तो jobbers वहाँ पे जाके क्या करते थे? They were dealing into securities, ना? Okay, on behalf of their clients, every broker was going there physically. डायरी में हर एक का trades लिखते थे, जिसका प्रॉफिट उसका प्रॉफिट, जिसका लॉस उसका लॉस. बट हाउ ही गॉट सक्सेसफुल? ही मैनिपुलेटेड द स्टॉक्स. Okay, that was one of the major ways through which he has earned money. But again, there was no person like him again in the bullish direction. Yeah, so that is how you will be able to identify the prices. वहाँ पे वो blackboard वाला सिस्टम था. अभी आज के डेट में आपके पास ये ऑनलाइन ब्रोकर्स है, मनी कंट्रोल की एप्लीकेशंस है, so you are able to identify all the data. और ये डिले होता है. डिले मतलब NSE की, मतलब मेन सर्वर से जब तक डेटा आता है ना आपके मोबाइल में, it has a delay of something around 5 to 10 seconds. So even that you need to make sure of overcoming the challenges associated with it. लेकिन वो पता नहीं चलता है हमको. ठीक है? So this is how that particular price discovery of your financial system happens, or rather your transaction happens in a given financial system. Buyer को पता चलता है कि Reliance अभी ट्रेड कर रहा है 2800 पे, seller को बेचना है 3000 पे, and you want to buy it at 2700. So you have to wait. According to your analysis, you are thinking कि थोड़ा नीचे आएगा तब जाके मैं इसको खरीदूंगा. Seller को लगता है ये 100 रुपए और ऐड कर दे तो मेरा प्रॉफिट और 100 रुपए बढ़ जाएगा. So this is how that transaction is happening, na? Buying and selling constantly. Is it clear? Okay. Now there are something around 60 different stock exchanges across the world. Okay, 60 different stock exchanges with a total value of nearly $69 trillion. इकोनॉमी कितना था अपना? हमारा इंडिया का सब कुछ बेच दो ना तो $3 ट्रिलियन आ रहा है. सब कुछ मतलब फ्रॉम A to Z.
all the assets, all the money, everything, कुछ भी बाकी नहीं रहता है. और यहाँ पे transaction volumes are $69 trillion. Now imagine the money that is being flown from London Stock Exchange to New York Stock Exchange to your any other stock exchanges, है ना? कितना पैसा जा रहा है इधर से उधर? Yeah. So in a given financial system, okay, just write down mock question. What is the role of a lender and borrower in a financial system? What is the role of a lender and borrower in a financial system? Okay. Yeah, so basically lender का function क्या होगा? He will be lending money, and borrower क्या होगा? He will be borrowing money. But who will be the lender? Examples of lenders: banks, then पब्लिक, हाँ, रिटेल इन्वेस्टर्स. उनको भी तो वो पैसा कमाना है ना स्टॉक मार्केट से, तो वी आर लेंडर्स ना. हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते क्या स्टॉक मार्केट्स में? तो वी आर लेंडर्स इन दैट केस. ओके, देन गवर्नमेंट एजेंसीज विल बी आल्सो इन्वेस्टिंग, या लाइक से फॉर एग्जांपल LIC है, या SBI खुद एक बैंक है वो जहाँ पे इन्वेस्ट करती रहती है. ठीक है. देन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs. अच्छा, उसका मैंने कोई असाइनमेंट नहीं दिया था क्या FIIs का? हाँ, तो वो आर द FII प्लेयर्स, बताओ. हाँ, नेक्स्ट रो वहां से बाकी है ना, तो क्यों द सेकंड रो. वही तो मैं बोल रहा हूँ, कुछ तो बाकी है. ऐसा कैसे जल्दी खत्म हो गया? 11 क्वेश्चंस को 11 रो में डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे. Vanguard, KKR. ओके, जस्ट अ मिनट. या सेकंड रो क्या हुआ? तो पूछा क्यों नहीं उस टाइम पे? Who are the major FII players? हाँ, नहीं किया है, क्यों? इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो उसमें स्टॉक्स कहां से आएगा? कंपनीज का नाम आता है. DII का मैंने LIC अगर बोला है, तो FII का कोई भी तो LIC होना चाहिए ना. या थर्ड रो, नो नो, स्टॉक्स के नाम कहां से आ रहे हैं? ये दालमिया. FII प्लेयर का मतलब क्या होता है? Who is an FII player? Sir, foreign institutions who invest in Indian stock market. Yeah, definitely. आप लोग Sir, stocks- Vanguard is the largest FII. Yeah. हाँ, FII का नाम नहीं, FII प्लेयर में कंपनी का नाम क्यों आ रहा है? अच्छा, वो कहाँ पे इन्वेस्ट किया है ना, वो उन्होंने इंडियन स्टॉक्स के नाम लिख लिए, तो थोड़ा ब्रेन आप लोगों ने यूज नहीं किया है अपना. ओके, ये कंपनी का नाम होता है. और ये अगर मैं LIC बोलता हूँ फॉर एग्जांपल, तो LIC इज अ मोर ऑफ लाइक अ म्यूचुअल फंड हाउस. उसके पास पैसा है तो वो इन्वेस्ट करता है मार्केट में. तो सिमिलरली यू हैव डिफरेंट वेल्थ मैनेजमेंट फंड्स अक्रॉस द वर्ल्ड. ओके, लेट मी जस्ट चेक. सी इट कैन. अच्छा, आपने वो पूरा कंपनी, अच्छा ऊपर लिस्ट ऑफ कंपनीज लिखा है, तो आपने वो इंडियन कंपनीज का नाम सोचे भी नहीं लिख लिया है. यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड है. ओके, दैट इज वन. देन अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, दैट इज सेकंड वन. देन यू हैव दिस गवर्नमेंट पेंशन फंड. यू हैव सिंगापुर गवर्नमेंट या वेल्थ मैनेजमेंट फंड. यू हैव यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड्स. You have First State Investments.
देन यू हैव फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो ये सब कंपनीज है जो इंडिया में इन्वेस्ट करती है। इसका मतलब कि फॉरेन प्लेयर्स जो है जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज नोन एज FII प्लेयर्स। और DII प्लेयर्स जो इंडिया के ही है बड़े प्लेयर्स कैटेगरी में आते हैं एंड स्टिल इन्वेस्टिंग इनटू इंडिया, दे आर नोन एज DII प्लेयर्स, राइट? ओके, एनी एग्जांपल्स ऑफ DIIs? या सेकंड रो यहाँ पे HDFC बैंक। All the mutual fund companies will come into DIIs. Okay, जितनी भी आपने सुनी है ना म्यूचुअल फंड कंपनीज, वो हर कोई कंपनी आपकी DII की कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है? और लास्ट में what was the one question which is left? अच्छा, कंपनीज, फॉरेन कंपनीज का हमने कर दिया था, लेकिन इंडियन कंपनीज विच आर ऑपरेटेड इन NASDAQ और ऑपरेटेड इन एनी अदर ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नो, TCS, वन, इन्फोसिस, HDFC बैंक, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डी, बजाज, आई एम नॉट श्योर, बजाज नहीं, नो, बजाज फाइनेंस है शायद, डॉलर्स में है। ओके, या एनी अदर? विप्रो, हाँ, HDFC आ गया। SBI, नो, नो SBI कहाँ पे लिस्टेड है? Not like that, listed on the foreign stock exchanges. Say for example, वो NASDAQ पे SBI का रेट कैसे आना चाहिए पता है? I think something it is trading around कितना 400-500 कितना चल रहा है SBI? 400, राइट? 80 रुपीज का अगर है तो 80 into 5 तो $5 का रेट होना चाहिए NASDAQ के स्टॉक एक्सचेंज पे। दैट इज हाउ आई एम आस्किंग। ओके, अगर आप जाके NASDAQ पे देखोगे टाटा मोटर्स का रेट समथिंग अराउंड वो भी इतना ही चल रहा है, $10, $8, ठीक है? इन्फोसिस चल रहा है समथिंग अराउंड $20 और $30, जो भी रेंज है उसका। तो अगर डॉलर्स के टर्म पे वहां पे लिस्टेड है, तब जाके आप बोल सकते हो कि द इंडियन स्टॉक्स आर लिस्टेड ऑन द फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस। ऐसा नहीं कि यहाँ की कंपनी और बाहर उन्होंने ब्रांचेस खोल दिए तो दे आर लाइक, वो क्वेश्चन नहीं था, ठीक है? तो henceforth SBI will not come, but HDFC Bank will come into that list. WNS, हाँ शायद है, yeah. Make my trip recently, yeah. Okay, any other? Okay, now write down what next mock question. What is the structure of a financial system? Mock. Huh? What is the structure of financial system? Okay, so write down the answer for the same question. The structure of a financial system comprises of financial participants. लिखो financial participants है नीचे. Yeah, financial participants, financial markets, financial instruments, financial services, financial regulators and financial management authorities, कोई भी क्या क्या लिखा? Comprises of financial participants, markets,
Instruments, मतलब products and services. Authorities. Yeah. Intermediaries. Financial intermediaries. Done. Or financial regulators, last में. Not required. Participants में automatically it comes into. Done. Okay. Now, who can all be the examples of financial participants? Financial participants में कौन-कौन आ सकता है? Buyers, sellers, banks, then FII, DII, brokers, then investment banks, आपका basic जो है, yeah, then retail and corporate banks, okay, mutual funds, hedge funds, okay, government agencies, your participants, your regulatory authorities basically, then stock exchanges, वो भी तो आएगा, मतलब straight का, हाँ अभी तो line है पूरा list है. Depository, retail investors, insurance and pension companies, registrars, custodians, clearing houses and brokers. ये इतने सारे participants हैं. Okay. Now just try to understand the meaning of everyone. Investment banks पता है. Normally it channelizes the funds from one lender to borrower and managing the portfolio. Retail और commercial banks कौन सी होगी? रिटेल कमर्शियल बैंक्स कौन सी है? आपने कोई भी बैंक आप जहाँ पे ट्रांजैक्ट करते हो ना, तो दैट इज योर बेसिकली योर कमर्शियल बैंक्स. SBI, SDFC, ICICI, Axis, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ओके, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक. तो ऐसे आपको सब नाम याद होने चाहिए. ओके, ये तो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर है, अभी और 35 सेक्टर्स के असाइनमेंट्स आ रहे हैं. ओके, या तब जाके कैपिटल मार्केट्स क्या है पता चलेगा. या टेक्सटाइल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, IT, ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, केमिकल्स, फार्मा. कितना याद रखोगे? और वो तो सिर्फ कैपिटल मार्केट्स का बिगनिंग है, राइट? उसके बाद फॉरेक्स आएगा, कमोडिटीज आएगा, डेरिवेटिव्स आएगा. So till the time you get saturated, let's have one break and then we will continue. Okay? Yeah. So we will have one break and we will connect after 20-25 minutes. Okay? Yeah, online students, we are having one break and we will connect it later.
GDP divided by okay, nominal GDP तो ये थोड़ा इकोनॉमिक्स का चीज है, मैं बताता हूँ। स्टॉक में इनकम टैक्स, हाँ इनकम टैक्स होता ही है। I am an equity researcher for the past 6 years. हाँ वो मैंने कुछ शेयर करना बाकी है, मैं शेयर इट इन द ग्रुप। अभी आपका ग्रुप स्टार्ट हुआ है, अभी शेयर इट। मेरा है ट्विटर हैंडल है। अलॉट हो जाने तो फिर आना, अलॉटमेंट मिलने तो पहले वही बोल रहा हूँ, अलॉटमेंट तो होने तो ठीक। हाँ नीचे नीचे जाना। बस नहीं आगे बनता है, थोड़ा आगे चल के जाना। नहीं यहाँ पे नहीं है, वो थोड़ा चल के आना पड़ता है। ठीक है।
None of you have posted on LinkedIn, no? नहीं मतलब in the last from the first session till this. Okay, how many impressions did you receive? Any idea? Just एक बार check करो. $195. Okay. Hashtags you have used? Which one? Louis. Other than that? थर्ड इमाटिकस लर्निंग यूज कर लो एवरी टाइम. सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट बैंक का नेम चेंज होगा. फोर्थ पुणे, ठीक है. फिफ्थ टैग मी एंड सिक्स्थ और सिक्स्थ यू कैन फाइनेंशियल एनालिसिस या ऐसा फाइनेंस करके सिर्फ ऐसे कोई भी फाइनेंस के टर्म्स यू कैन यूज इट. वो विजिबिलिटी ज्यादा आएगी. I got just now 30,000.
Everyone is on LinkedIn और डीमैट अकाउंट सारे के ओपन हो गए. डीमैट अकाउंट्स आर देयर. कब मुहूर्त आ रहा है? का नहीं है, इसलिए आप तीनों का है डीमैट अकाउंट्स. लिंक्डइन डीमैट. हाँ, डीमैट नहीं है भाई. मतलब डीमैट है कि नहीं है? नहीं, वो आपका है. Anyone is trading over here? आप नहीं. हाँ, no. Yeah, Neeraj, can you mute your mic?
Okay, let's calm down and let's start again. Yeah, everyone. Okay. Group discussions, we can do it later. Okay. So we were discussing about the key different financial participants of the financial market. So you have investment banks, you have retail and commercial banks, you already have mutual funds and pension funds. Yeah, last bench later. Okay. You have different government agencies, you have stock exchanges. Stock exchanges कौन-कौन से India में? BSE and NSE. Okay. Then you have depositories over here. Okay. Depositories कौन-कौन से है? Okay. We will definitely understand one by one each and every one. CDSL and NSDL. Then you have retail investors like us. You have insurance companies like कौन-कौन सी है insurance companies of India? LIC. Yeah. Okay. So LIC, AXA, HDFC Life, ICICI Prudential, Kotak Life, Max Prudential, and many ones. Okay. These are all your insurance companies. अच्छा तो pension company कौन सी है India की? Pension companies of India. इंश्योरेंस तो सबको पता है, पेंशन हमको चाहिए नहीं इसलिए पता नहीं है. नेशनल पेंशन पेंशन कंपनी ऑफ इंडिया कौन सी है? फ्रॉम ऑनलाइन. या एनीवन? नेशनल पेंशन फंड ऑफ इंडिया, एनपीएस या नेशनल पेंशन स्कीम, ऐसा कुछ सुना है? एनपीएस पोर्टल. ओके, तो आज एक बार वेबसाइट पे जाके आना, जरूरत पड़े तो एनरोल कर लेना. ओके. आफ्टर द एज ऑफ 60 यू विल बी डेफिनेटली नीडिंग अ पेंशन अमाउंट. कि नहीं चाहिए? हाँ नहीं 60 नहीं, कितना बोला था किसी ने, कब रिटायर होना है? The other day we were discussing that retirement age ना. नहीं वो तो आइडियल एज है, आप लोगों का मैं पूछ रहा हूँ. Someone was saying 40, 45 कहाँ गए? भूल गए क्या? Yeah? Okay. ठीक है. और कोई 45 बोल रहा था, तो after 45 you will need pension ना? Okay. लेकिन that is one of like National Pension Fund of India, वही NPS portal है उसका. Other than that, pension plans are there or pension saving schemes are there, launched by different your insurance sector companies. Okay. Registrars are there. Okay, to facilitate all the trade transactions. You have clearing houses. So there is only one clearing house for settlement of all the trades, which is nothing but your Clearing Corporation of India, CCI. Okay. And last one is your brokers or intermediaries. Brokers can be your online, offline job, homework करके आने वाले हो, or any other intermediaries are there. Last में there is a custodian. Okay. So which is the largest custodian bank? JP Morgan. Yeah. JP Morgan, I've already mentioned about. Any other? BNY Mellon. Okay. Other than that, okay, write down that homework. Identify 10 different custodian banks. Identify 10 different custodian banks. क्वेश्चन नहीं, मतलब आवाज नहीं आ रही है? अच्छा एक काम कर, they will be gone then. Okay, कहाँ तक मेरी आवाज आ रही है? Like from till which bench it is coming? यहाँ तक आ रही है. Last two benches. एक काम करो, अब यहाँ से ही बैठ जाओ लाइन पे. This horizontal rule, there is no other choice.
पीछे पीछे से स्टार्ट करो तो आगे यहाँ पे जगह बचेगी, लास्ट फ्लोर की चली जाओ। या रेस्ट अदर्स पीछे। Okay, you can come forward. और यहाँ पे आगे जाओ, पीछे हाँ मेरा बैग ले लो, पीछे डाल दो चलेगा। ओके डन, पीछे है जगह, एक और चले जाओ यहाँ, so that this two can accommodate there. These two ladies can accommodate. हाँ एक और पुश कर दो, हो जाएगा। I hope now it's better. ओके डन, बहुत बातें कर रहे थे। या अभी से T3 दे देता या T4, एनीवेज। ओके कस्टोडियंस, ओके यू हैव रिटन द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई। ओके ये क्वेश्चन जिनको पेंडिंग है, हाँ 10 डिफरेंट कस्टोडियंस। Okay. Now after that you are having different types of products, okay, ranging from different markets. So say for example, there are 5 different types of markets. Write it down. First is capital market. Second is the money market. Capital market, money market, forex market, commodities market, derivatives market. Okay, done. Now into all this particular different types of markets, you have again different types of instruments available, right? So say for example, if I'm saying capital market में है primary market and secondary market. So उसके नीचे और एक classification का arrow कर दो. Capital market उसके नीचे है primary market and secondary market. Okay. In the secondary market में 2 और arrows करो और वहां पे लिखो equity market and debt market. Okay. In the money market, write down treasury bills. Certificate of deposits. Okay. Call money and notice money markets. Call money and notice money. या ये सब मनी मार्केट के अंदर है. कॉल मनी एंड नोटिस मनी. और लास्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इज योर कमर्शियल पेपर्स. कमर्शियल पेपर्स.
Commercial papers, right? In the forex market, you have foreign exchange transactions. Forex market, you have foreign exchange transactions. Okay. In the derivatives market, write it down. Derivative market के instruments, futures, forwards. फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स डेरिवेटिव्स के अंदर में लिखना फ्यूचर फॉरवर्ड हो गया ऑप्शंस एंड स्वैप्स स्वैप SWAP swaps कमोडिटीज मार्केट जो है ना वहां पे एक असाइनमेंट लिख लो आइडेंटिफाई द डिफरेंट कमोडिटीज traded in the commodity exchange. Identify the different commodities market, commodities products traded in the commodities market. Products. Okay, done. Now, other than this, the other instruments, मतलब एक other securities available करके एक heading लिख दो. Other securities available in the financial systems. Other securities available in the market. Government securities. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के नीचे लिखो टेबल्स ट्रेजरी बिल्स और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स commercial is for private companies only. Debentures, warrants, debentures, warrants, और लास्ट में जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. दैट इज द लास्ट वन. जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. Done? Yes. Financial regulators. Now write another heading, financial regulators. Like different financial regulators are there in India.
डिफरेंट फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले फॉर कमर्शियल बैंक्स, उसके नीचे फर्स्ट वन इज कमर्शियल बैंक्स, उसके सामने लिखो आरबीआई। ओके डन। इंश्योरेंस सेक्टर और इंश्योरेंस कंपनीज, स्टॉक एक्सचेंज सेबी, स्टॉक एक्सचेंज सेबी, पेंशन फंड्स पीएफआरडीए, पेंशन फंड्स, पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। डन। ओके, ये असाइनमेंट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का दिया था मैंने कोई? ओके, राइट डाउन वन असाइनमेंट। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इट इज IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इरेडा। नहीं, इंश्योरेंस में IRDA है और स्टॉक एक्सचेंज में सेबी है, डू नॉट मिक्स अप। इंश्योरेंस में सेबी कैसे हो सकता है? इंश्योरेंस में सेबी क्या करेगा? हाँ यस, फिफ्टीन। Okay, write down assignment question. What is anti-money laundering? Anti-money laundering. Anti-money laundering. Anti-money laundering, AML. Okay. What is anti-money laundering? Or which was the recent legal act of AML formulated? Which was the recent legal act of AML formulated? So can you just repeat? Which is the recent legal act of AML formulated? Done. This is the assignment. तो आपको लेटेस्ट एक्ट जो भी होगा वो आइडेंटिफाई करके आना है. डू नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट. ठीक है, ये सब क्लास के असाइनमेंट्स के मार्क्स में डायरेक्टली आपके लेवल 1 मार्क्स में ऐड कर दूंगा. ठीक है, सो इफ यू आर नॉट डूइंग प्रॉपर्ली, ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड, आपका T3 T4 आसानी से आ सकता है. गुड. फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके बाद एक हेडिंग लिखो फाइनेंशियल सर्विसेज. फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके नीचे दो कैटेगरीज, फंड बेस्ड एंड फी बेस्ड. Fund based services and fee based services. Okay. So fund based services में write down that categories: mutual funds, leasing services,
Leasing, LEASING, leasing services. Done. So it can be your housing rental services, or it can be any other financial leasing services. Yeah. Then housing financial services. Housing financial services. Housing financial services. Done. Okay. Now housing financial services के नीचे your assignment. Which are the different companies listed on stock exchange? Which are the different companies listed on stock exchange in the housing financial sector? In the housing financial sector. Which are the housing financial services companies listed in the stock exchange? Okay. Any idea? Sir, LIC Housing Finance, Repco Home Finance. GIC. Okay. Any other? Any other examples? Yeah, पीछे. India Bulls Housing Finance. Then, huh? Judge Fins. So the HDFC main, normal HDFC, not that HDFC Bank, standard HDFC. Okay. Even L&T Housing Finance is there. Shriram Transport Finance are there. बहुत सारे हैं. ठीक है. In the fee-based services, right? Portfolio management. Advisory services. And third one is brokerage services. Done? Okay. Now brokerage can be linked to your that different brokers. Huh? Okay. So the assignment for you on the LinkedIn post for today, 4 questions लिख लो. You have to structure your answers accordingly. ठीक है? Write down LinkedIn post exam या assignment जैसे भी लिखना है आपको. ठीक है? So please can you repeat? Okay. Link हाँ अभी question start नहीं हुआ है मेरा. Okay wait. Okay. What is a financial system? What is a financial system? LinkedIn post is mandatory for everyone. Huh? Okay. Which are the different products and services? Which are the different products and services of financial system? Third, how investment banking is playing a role in the financial system. How investment banking is playing a role in the financial system. Okay. Fourth, yeah, and the final question. Give examples of 2 different cash equities.
गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कैश इक्विटीज, मतलब कोई भी स्टॉक्स के, बट मेंशन देयर शेयर प्राइस, ब्रैकेट में लिख दो सिक्योरिटी नेम, शेयर प्राइस, and the percentage returns in the last 10 years. Percentage returns in the last 10 years. Okay. Percentage returns in the last 10 years. Done? Okay. अब वो हुआ कैश इक्विटीज या स्टॉक्स के लिए, उसके साथ लिख दो 2 बॉन्ड्स, ओके, 2 डिफरेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. Write the name of the bonds and also mention the coupon rates. Coupon rates, interest rates. Coupon rates, coupon, yeah, interest rates. हाँ, annually, coupon annually होगा. एक सेकेंड. आना नहीं चाहिए वैसे, बट लिंक शेयर करना ऐसा कुछ होता है. डन. सो लिंक्डइन पोस्ट में आपको क्या क्या लिखना है? हैशटैग आपको यूज करने हैं. सबसे पहले मेरा ही कर दो, ठीक है? यू विल बी प्रमोटिंग मी इन दैट केस, है ना? तो आई नीड टू हैव दैट मोर ब्रांड वैल्यू देन दैट, ठीक है? ऑफ कोर्स आई एम प्रेशियस इन दैट केस. ओके, या दैट्स फाइन. सेकंड आपको इमार्टिकस लर्निंग हैशटैग, ओके. थर्ड हैशटैग पुणे. और हर बार हैशटैग्स आप जितने भी लिंक्डइन पोस्ट लिखोगे, एवरी टाइम यू हैव टू राइट अ न्यू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नेम. तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की कंपनीज का एक लिस्ट लिख दो, तो हर बार वो चेंज करते रहना. डू नॉट राइट ऑल ऑफ देम इन वन. वो गलती मत कर देना, आपको हर कोई जॉब नहीं देने वाला है. आउट ऑफ ऑल दिस एनी वन इज गोइंग टू गिव यू. ओके, सो फर्स्ट वन इज BNY Mellon. ओके, BNY Mellon. सेकंड Citco, CITCO, Citco. Third, Northern Trust. Fourth, SG Analytics. Fifth, AXA, AXA. हेल्प कर दो पीछे. ओके, देन सिक्स्थ, eClerx, ECLERX. ओके, उसके बाद कौन सा लिखोगे? whichever one is left. Barclays you can write first. Barclays can be written first. Barclays. उसके बाद Credit Suisse can be written. Yes. So JP Morgan, Morgan Stanley, ये सब तो वैसे ही by default आने वाले हैं. But जो आपको नहीं पता है, that list I am giving it to you. Okay. But in every LinkedIn post, you have to change the name of the IB banks. Do not keep the same as it is. Okay. Only one post में एक ही नाम लिखना. Do not write more than one investment banking name. वो गलती मत करना. Okay. Don't do that. Yeah. हाँ. नहीं, Marticus. हाँ, एक hashtag investment banking लिख दो एक. Hashtag investment banking.
hashtag IBOps, that is investment banking operations, IBOps. Okay, or last hashtag will be your finance, financial analytics, financial analysis, financial description, जो भी आपको लिखना है, you can put it down. Anyone. Done? So this will like help you to write down the post, revise the topics that we have discussed. ये जितने भी हमने आज लिखे हैं, try to make the post out of it, and उसके बाद definitely you will be able to balance the learning. Okay. और हर रोज आपको वो like from current affairs perspective, you need to analyze your, definitely you need to, one article has to be posted in the WhatsApp group every day. Everyone is added now. Anyone left? Okay, ठीक है. So please make sure that you will be like posting one article analysis. You can write it down in the LinkedIn, but जो आपने पढ़ा है, you can share it in the WhatsApp group. Okay, but do not post again that simple, very like top best stocks to buy, best banks to watch out for. Don't do that. Try. You have to start with something very basics. Okay. You have to understand the very basics of finance, the very basics of your balance sheets, the very basics of your fundamental analysis of any company. Okay, screener आपके पास है. I think we have mentioned of that application, right? Screener for that fundamental analysis. वो मैंने list नहीं दिया है क्या? Okay. Okay, do one thing. जल्दी से list लिख लो एक. I don't know how many applications you have it or not. The first list that you have to write it down is for fundamental analysis. अगर देखना है कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो screener.com, screener SCREENER, screener.com, screener. screener.com करके है, ठीक है. For daily market news or capital market news or live markets, money control application has to be there. Okay, money control होना चाहिए. There is one more related to this, which is your iTribe, which I'll be posting the link of that application in the group. Okay, iTribe, TRIBE, tribe. Live markets plus current affair news. Okay, पीछे जरूरत पड़ेगी इसकी. हाँ, ओके. उसके बाद आईपीओ एनालिसिस. आईपीओ एनालिसिस के लिए है चित्तौड़गढ़.com करके है, CHITTORGARH, TTORGARH, चित्तौड़गढ़. वो सिटी का नाम है राजस्थान का, ठीक है. यू कैन, ओके. ई टाइम्स वो पता नहीं, अगर होगा तो आई एम नॉट श्योर. यू कैन कोई भी देख सकते हो. .com वेबसाइट है, सो .com आएगा पीछे, ठीक है. अनदर मोबाइल, द वेबसाइट फॉर ऑप्शन एंड फ्यूचर्स एनालिसिस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए है ऑप्स्ट्रा, OPSTRA. ओके. और अगर आपका डीमेट अकाउंट ऑनलाइन ब्रोकर्स में है, ठीक है, ऑनलाइन ब्रोकर्स आर योर Zerodha, अपस्टॉक्स. Sensible, it is for option chain analysis. Option chain analysis. This is again a website. It is not like application hai, but it is difficult to screen that on mobile. Okay. After that, Financial Times or ET Times, आपका जो भी है, या Economic Times, Market News. Okay, you all have that. ठीक है. So that is for again current affairs और करंट मार्केट न्यूज या जो भी अपडेट्स है. ओके. इसके अलावा क्या बचता है फिर?
Huh? Yeah, technical, but that is technical analysis. We are not going for technical analysis. But still, if you want to like just analyze something, so trading view करके है. Trading view is the mobile application भी है और website भी है. Trading view. Okay. TRADINGVIEW. Trading view. View. Okay. Trading view. Foreign exchange markets के लिए है investing.com. Okay. Investing.com. ET Money is for this. ET क्या पूछा? But that global platform, जब global markets आपको देखने हैं तो investing.com is a better one. Done? Okay. I think कल आपका क्या लेक्चर है? कल नहीं है ना? हाँ तो फिर गेस्ट लेक्चर है, ठीक है? तो enjoy the holidays, ठीक है? Everyone. I think we will be directly meeting in the next week. I think the last lecture of this week is also soft skills. So थोड़ा soft skills का भी आपका polishedness हो जाए, then I will be keeping one presentation. But again, we are moving slowly. Okay. इतने assignments कर दो पहले. Basics और fundamentals clear होने चाहिए. Then we will be gearing up ourselves. Okay. I think then we are halting this session as of now. यहाँ पे we are closing it. Okay. Next session, please make sure of completing all the assignments. One, second, LinkedIn post आपके लिए है. और third assignment शायद आएगा आपका soft skills में, which is nothing but I guess your elevator pitch might be coming. आ गया? Link आ गया? हाँ तो वो submit नहीं किया होगा? हाँ तो वही हुआ ना, submit नहीं हुआ. That is what वो मुझे पता है नहीं हुआ है, तो that's what you need to make sure of. Okay? Done? Okay? Yeah, online students, any other queries? No, sir. Offline students, any other queries? Sir, for options analysis, which one is there, sir? Opstra. 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 Thank you, sir. Attendance sheet कहाँ पे? Same. Of course, आपका सेल्फ वही रहेगा ना. प्लस और माइनस इतना ही चेंज है. हाँ, हमने जो आज थोड़ा बहुत पढ़ा है वो करंट अफेयर्स आप कुछ पढ़ के भी आओगे, थोड़ा अपना एनालिसिस रिसर्च करोगे सब. डन एवरीवन? ओके. अटेंडेंस हो गया आपका? कहाँ पे अटेंडेंस शीट कहाँ पे? जल्दी साइन करके लेके आओ. हाँ, चेयर्स लेके आप बाकी के पीछे वहीं पे साइन करके लेके जाओ. पिन लिखा हुआ है तो चलेगा. एडिट करना है तो थोड़ा बहुत आज के ऊपर एडिट कर. हाँ चलेगा, एडिट कर दो, ऊपर एडिट ऑप्शन है, हैशटैग ऐड कर देना. I am not sure of.
I'm not sure of. I don't know. That also I don't know. No, you have to. I'm not sure of whether if it is online, you will be receiving an online link for joining it in the group. If it is offline, then you have to come offline. And then there is no like option that you can attend online. Okay. Okay, done. Everyone. Everything cannot be facilitated. वो रहेगा because आप सिर्फ 15 एक बैच नहीं है ना, इसलिए थोड़ा रहेगा. Yeah, done. Everyone. Okay, then we are closing the session. Okay. Okay. Okay then. Thank you. And जो भी queries है आपको with respect to your like portals या उत्कर्षा मैम से मिलना है या जो भी है, go to the office and common queries या doubts जो भी है you can ask her. Yeah. Yeah, online students, any doubts? No, sir. Sir, I wanted to update my LinkedIn profile, sir. So regarding that, you can guide me. मतलब क्या है आपका एग्जैक्ट? आप यूपीएससी कर रहे हो तो यूपीएससी के लिए मुझे अच्छा फाइनेंस के लिए ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं, क्योंकि फाइनेंस इन इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन. वो सैंपल है, यही आएंगे. नो ऐसे टाइप के आ सकते